On to a tragedy that has shaken the nation. 11 children dead in Madhya Pradesh's Chhindwara and 3 more in Rajasthan, all after being given a cough syrup that should have never made it to the shelves in the first place. In the latest, an SIT has been formed to probe the case, which is scheduled to travel to Tamil Nadu soon for an investigation. Additionally, the Central Drug Standard Control Organization, or CDSCO, will write to Tamil Nadu FDA, or Food and Drug Administration, to take strict action against the Coldrif cough syrup manufacturer under most serious offences. Meanwhile, Dr. Praveen Soni, the man who prescribed the syrup, has been arrested as investigators scrambled to piece together how a medicine meant to heal turned deadly. Also, the central government is holding a video conference with states this evening at around 4 p.m, stepping up the alert after the children's deaths linked to cough syrups in MP and Rajasthan. And an ongoing investigation has prompted the Union Health Ministry to issue an advisory as well. जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रवीण सोनी, क्योंकि उनके द्वारा मैक्सिमम बच्चों का जो इसमें इलाज किया गया था और उनके द्वारा जो ड्रग है, जो प्रतिबंधित जो ड्रग है कोल्ड्रिफ, इसको जो प्रिस्क्राइब किया गया था, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो ट्रीटमेंट उन्होंने जो दिया है बच्चे के, उस आधार पर उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। और इसके अतिरिक्त जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तमिलनाडु की, श्रेसान फार्मास्यूटिकल्स, उनको भी जो इसमें जो है मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया है। इसमें एक SIT का गठन IG जोन साहब के द्वारा किया गया है और वो टीम जो है तमिलनाडु भी जाएगी। The suspected culprit, Coldrif cough syrup manufactured by Sresan Pharma in Tamil Nadu, now under fire for containing diethylene glycol, a toxic industrial chemical linked to kidney failure and fatal poisonings across the world. Symptoms were chillingly similar: mild cold followed by vomiting, dizziness and reduced urine output. In every case, the end result was kidney failure and death. In Rajasthan, the fallout was swift. Drug controllers suspended, 19 products pulled from the shelves, and distribution of syrups containing dextromethorphan halted. Chief ministers in both states have ordered statewide bans and launched full-blown investigations. The state of Tamil Nadu has also imposed an immediate production ban on the pharmaceutical company, pending lab test results. Meanwhile, alerts have gone out to Odisha and Puducherry, where the same batch may have been distributed. Nationwide inspections by the Central Drug Standard Control Organization, or CDSCO, are now underway, and a multi-agency probe is looking into possible water contamination or infections. But for the grieving families, this is not just a regulatory lapse. It's a crushing loss and a demand for answers that's only growing louder. मेरा इकलौता बेटा था जिसकी मौत किडनी इन्फेक्शन में सबसे पहले हुई है। कितने साल का था वो? 7 वर्ष का था। अच्छा, 7 वर्ष का था। क्या हुआ था उसको और कैसे आपने अस्पताल लेकर? उसको ऐसे नॉर्मल बुखार आया था जी, तो मैंने 17 तारीख को प्रवीण सोनी के पास दिखाया था सर। तो उसकी जो सारा अभी सरकार द्वारा बैन लगाई हुई है कोल्ड्रिफ, वो सारा सर ने दिए थे मेरे बच्चे को। तो उसने 4 दिन तक मैंने पिलाया, उसको आराम नहीं दिखा, तो मैंने उसको फिर सेकंड बार फिर दिखाया प्रवीण सर को। अच्छा। तो 2 दिन बाद फिर उसने उल्टी चालू कर दी। उसके बाद मैंने छिंदवाड़ा ले गया। वहाँ पे रात भर विवांता हॉस्पिटल में GM श्रीवास्तव ने भर्ती रखा। उसके बाद 24 तारीख को बच्चे की यूरिन बंद हो गई। तो 24 तारीख को नागपुर रेफर कर दिए। अच्छा। वहाँ से 24 तारीख से लेकर 1 तारीख तक बच्चे का ट्रीटमेंट चला, डायलिसिस हुई 6-7, लेकिन 2 तारीख को बच्चे ने दम तोड़ दिया।